जो रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, तो उनको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनको कोई रिस्पेक्ट देगा. इंदिरा गांधी. I learned how to work hard and dedicate yourselves in your life, anything you want to achieve. If they do sports, they do it for the love of sports. I see that you're very very determined. क्योंकि अगर आप हमेशा नेगेटिव ही सुनते जाएंगे तो you will not improve. 1982 एशियन गेम्स में जब ओथ लेने के लिए एक थे प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से, एक हॉकी के प्लेयर थे कैप्टन, और एक हमारे एथलेटिक्स के बहादुर सिंह थे. So karma plays a very important role in everybody's life. See, jealousy existed and still exists. It is just infinite cycle. Yes. See, I want to ask, what's the magic behind this glow in this age also? Magic behind the glow is yoga and meditation. Hi ma'am. Hello. First of all, I'm grateful to have you. कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू फॉर दैट. My pleasure. तो कैसे हो? How are you? मैं ठीक ठाक हूँ, और आप बताइए. मैं भी ठीक हूँ. तो guys, today we are having GEETAZUTSHI on our podcast. और ये पद्मश्री और अर्जुना अवार्डी हैं, और ये 3 years एशियन मेडलिस्ट भी रही हैं, और ये ओलंपिक्स में भी खेल कर आई हैं. सो हाउ इज लाइफ नाउ? अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ, एंड मैंने दूसरी हॉबी शुरू कर दी है, हॉर्सबैक राइडिंग की. अच्छा. एंड आई एंजॉय हॉर्सबैक राइडिंग, और जब भी मैं न्यूयॉर्क में हूँ, आई ऑलवेज गो फॉर हॉर्सबैक राइडिंग. दैट्स माय हॉबी नाउ. सो हाउ इज न्यूयॉर्क? New York is beautiful. New York is beautiful, but the riding is something which keeps me occupied, and I also still मैं अब दौड़ने भी जाती हूँ, और मेरी रनिंग कंटिन्यू है, बट मैं to keep myself fit. But riding मैं करती हूँ सिर्फ as a hobby. नहीं, like what's the vibe of USA? Difference between, if anyone will ask कि इंडिया में और यूएसए में क्या डिफरेंस है, in that perspective? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास टाइम है, मेरा स्केड्यूल है, और मैं वीकेंड पे निकल जाती हूँ. मेरे को जो भी राइडिंग वगैरह करनी थी, मैं वीकेंड पे चली जाती हूँ. और देयर आर ऑल फैसिलिटीज, एंड राइडिंग अकेडमीज आर एवरीवेयर. सो आई एम अटैच एक एकेडमी से हैं, और मैं हर वीकेंड वहाँ जाती हूँ राइडिंग के लिए. गुड. हाउ दैट इंटरेस्ट और हॉबी डेवलप्ड? लाइक देयर वाज पहले से ही ये सब कुछ था कि वन डे यू विल डू, ये सब करना है मुझे? नहीं, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी लड़कियां राइडिंग के लिए जाती थी. सो वन डे मैं उनके साथ चली गई देखने के लिए, एंड कुछ बात थी जो मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई राइडिंग से, और मैंने लेसन लेने शुरू कर दिए. सो अब तो 20 साल से भी ऊपर हो गया है मैं राइडिंग करती हूँ, एंड इट मेक्स मी हैप्पी. सो I like to do something which makes me happy. So running तो करती हूँ on the side पे weekdays पे, मगर riding मैं करती हूँ on weekends पे, which all day I spend there. Tell us about old times, like how athletics started, how कि जोश कैसे भरा कि I want to play for India or something like that. Actually हमारा जो ग्रैंडफादर का मकान था वो स्टेडियम के बहुत पास था, गुड़गांव में सिविल लाइंस पर. तो मैं एक दिन स्टेडियम में जाकर वहाँ बैठ गई. जैसे मैं राइडिंग के लिए जाके मैंने देखा, ऐसे ही मैं स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम में जाके बैठ गई, और मैंने देखा वहाँ से बहुत से बच्चे वो खेल रहे थे. तो मैंने बैठ के देखा, कुछ दिन जाती थी, बैठ के देखती थी. फिर एक दिन मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. तो वहाँ पे जो कोच हुआ करते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुमको थोड़ी सी कोचिंग करता हूँ. तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज करवाई, और मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मेरे को ये बोला, एक दिन तू बहुत बड़ी एथलीट बन जाएगी. और वो मुझे आज भी याद है. वो चाहे रिटायर हो गए हो, मगर वो उन्होंने तब बोला था जब मैं 12 साल की थी. लाइक ये पॉडकास्ट करने से पहले मैंने आपके ऊपर रिसर्च की थी, तो
वहां पर ऑन इंटरनेट विकिपीडिया वो शो कर रहे हैं कि आपका जो कोच था वो मोहम्मद बाबर था, स्टार्टिंग से ही वही थे? नहीं, मेरे मेरे कुछ 3 या 4 कोचेस रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे कोच थे मिस्टर नेहरा, गुड़गांव में स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम में। उन्होंने मेरे को ट्रैक पे ले आए। जब देखते थे मैं बैठती हूँ, आके देखती हूँ, तो वो मुझे ट्रैक पे ले आए और मुझे थोड़ा सा उन्होंने रनिंग कराई और एक्सरसाइज कराई। उसके बाद में उनकी ट्रांसफ़र हो गई और उसके बाद दूसरे कोच आए, निर्मल सिंह, जो NIS के कोच थे। उन्होंने मेरे, क्योंकि मैं सारे इवेंट्स करती थी, उन्होंने मेरे को 2 इवेंट पकड़ा दिए, 400-800 मीटर्स, और उसकी ट्रिक मेरे को कोचिंग करने लग गई। तो फिर मैं नेशनल लेवल पे 400-800 मीटर्स दौड़ने लग गई और मैं विन करने लग गई। उसके बाद में मेरे फादर ने देखा कि आई नीड बेटर ट्रेनिंग, तो निर्मल सिंह की, जो NIS के कोच थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। तो मेरे फादर ने जा कर के उस टाइम के जो एक बहुत बड़े एथलीट थे, मिस्टर श्री राम सिंह, उनसे पूछा, क्योंकि वो खुद भी एथलीट थे, कि इफ़ ही वुड लाइक टू कोच मी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं कोचिंग कर दूंगा, बट मैं इनके साथ नहीं हो सकता, मैं स्केड्यूल बना के दे दूंगा, शी हैज़ टू फॉलो। तो उन्होंने स्केड्यूल बना के देना शुरू कर दिया और विदिन 6-7 मंथ्स जब नेशनल स्टार्ट हुए, मैंने सब जगह नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करने शुरू कर दिए 400-800 में। तो उनकी कोचिंग जो थी वो इतनी हार्ड थी, तो वो कहते थे कि कोई लड़का भी नहीं कर सकता इतनी हार्ड ट्रेनिंग। तो मेरी ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, जिसमें सैंड रनिंग, हिल रनिंग इंक्लूड होती थी, जो मैं दिल्ली में जाके करती थी, और मेरे फादर मेरे साथ जाया करते थे। तो उधर से मेरी परफॉर्मेंस आने लग गई। और जब मैं पहली दफ़ा एशियन गेम्स में गई बैंकॉक में, मुझे किसी भी मेडल की होप ही नहीं थी, मगर हीट्स दौड़ने के बाद में थोड़ा सा होप होने लगी। फिर भी गोल्ड की नहीं थी, मगर जस्ट रेस ख़त्म हुई, मेरे को बहुत सरप्राइजेस हो गए कि मैं गोल्ड जीत गई थी। तो उसके बाद ही फिर सब कंटिन्यू चलता गया, एंड आई स्टार्टेड टू इम्प्रूव, एंड I will just say that luck was with me, and my hard work was with me, and the God was with me. So you have to have 3 things in order to have a success: hard work, luck, and God. Okay. So मेरे पास तीनों थे। So how's life now? Like अभी का रूटीन और तब के रूटीन में क्या डिफरेंस होता था? अब तो मैंने रिटायर हो गई हूँ, सो अब मैं अपने को फिट करने के लिए मैं रखती हूँ रनिंग, और आई डू अदर एक्टिविटीज, वॉकिंग, रनिंग। Like जब हम बात कर रहे थे, then you said you do meditation. हाँ, थोड़ा उस पे लेकर आता है। मेडिटेशन मैंने शुरू कर दिया था। योगा मैंने शुरू कर दी थी जब मैं 78 में एशियन गेम्स की कोचिंग कर रही थी NIS पटियाला में। तो वहाँ पे एक कोच थी जो 400 मीटर्स की, उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, कमलजीत संधू। तो वो जब अपनी एथलीट्स को एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग के बाद योगा कराती थी, तो मैं उनकी ग्रुप को ज्वाइन कर जाती थी, और मेरा वहाँ से इंटरेस्ट शुरू हो गया योगा का। और उसके बाद मैंने योगा कंटिन्यू अपने होल लाइफ, अब भी मैं योगा करती हूँ, और क्रेडिट मैं कमलजीत संधू को देती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने योगा सीखा। इंट्रोड्यूस और हाँ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और अब मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं योगा करती हूँ। सो मैंने अब मेडिटेशन बाद में शुरू कर दी थी। मेडिटेशन आप करते हो सुबह, जैसे आपने बताया था कि 3-3:30 बजे? मैं मेडिटेशन के लिए जो है मैं 3:30 और 4 AM के बीच में करती हूँ। वही टाइम क्यों? उस टाइम पर ऐसा कि मैं अपने टेरेस पे चली जाती हूँ, अपने घर की टेरेस पे, और इट्स सो क्वाइट, क्योंकि इतना नॉइस है एवरीवेयर, क्योंकि आपने देखा 3 साइडों पर बहुत नॉइस है ऑटो से करके। यू नो लाइक जो बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में लोग होते हैं, जो उनको प्रैक्टिस करते हैं, वो बताते हैं कि जो 3:30 to 4 AM वाला जो टाइम पीरियड है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और द पोर्टल इज ओपन एट दैट टाइम। या एंड दैट टाइम इज बेस्ट फॉर मेडिटेशन। बेस्ट फॉर मेडिटेशन बिकॉज़ यू हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट। या एंड दैट्स द रीजन आई डू दैट टाइम। या दे से कि दैट टाइम यू डू मेडिटेशन एंड आफ्टर दैट प्लान योर डे। और उस प्लानिंग में जब हम, जो पीस ऑफ माइंड आता है उसके साथ जब हम डे प्लान करते हैं,
तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. That is very true, and that's why I do meditation at that time. So मैंने अपने घर के टेरेस पे एक जगह बना रखी है फेसिंग नॉर्थ, और उधर बैठ करके मैं रोज सुबह 3 से 4 बजे तक मैं मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि आपने जो बताया ना ब्रह्म उस टाइम ओपन होता है, पोर्टल उस टाइम ओपन होता है, तो एंड इट्स सो पीसफुल एट दैट टाइम. बट ऑब्वियसली देयर आर मस्किटोज देयर व्हिच आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ, मगर उस टाइम जो होता है ना इतना पीसफुल होता है दैट so much. आई एंजॉय डूइंग इट. I also do that. Yes. Like जब I interacted with you first time in their college, and means you know the one who practice meditation उसको instinct आ जाता है कि how peaceful someone's energy is, how you know attractive someone energy is, and I find so much peace in you कि I don't know how to just you know convey the message, but थैंक यू. मगर हाँ, मेरे को ये जब पता चला कि वो टाइम है इज द बेस्ट टाइम मेडिटेशन का, आई स्टार्टेड टू डू दैट. और वो मैंने शुरू किया है, मैं जब न्यूयॉर्क में थी तब से मैंने शुरू कर दिया था. how meditation helped you, like A different lot. क्या क्या Because changes आए? changes I cannot tell, but I feel peace inside myself. Because आपको खुद पता चल जाएगा कि जब आपको अपने अंदर में शांति महसूस होगी, and you are on your own and you know what you're doing in your life. So that all matters. तो वो meditation जो है वो अंदर में peace लाता है, और उस टाइम पे करने में it's you feel much better. How much the role of coach is helpful in building an athlete? कोच का रोल जो है एक एथलीट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोच का, क्योंकि एक तो कोच जो है वो एथलीट की ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाता है. डिसिप्लिन ही नहीं, वो उसको देखता है कि वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खाना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, टाइम से ट्रेनिंग होनी चाहिए, और मेक श्योर दैट कि वो स्केड्यूल को फॉलो कर रहा है. क्योंकि अगर सब कुछ जो है डिसिप्लिन से चलेगा, देन ओनली द परफॉर्मेंस विल कम आउट. अगर तुम्हारा लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो परफॉर्मेंस विल नॉट कम आउट. तो मैंने अपनी लाइफ में चाइल्डहुड नहीं रहा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहा, मैंने चाइल्डहुड नहीं रहा, मैंने इतनी मेहनत करी और सब कुछ इतना डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में था कि आई मिस माई चाइल्डहुड. मगर ये तो कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना. तो मैंने अपना चाइल्डहुड तो खो दिया, बट आई अचीव रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन माय लाइफ. और कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एक एथलीट की लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आफ्टर लाइक जब मैंने आपके ऊपर रिसर्च की तो उसमें बताया गया था कि 2008 में और 2 में अप्रॉक्स आप वापस इंडिया आके कोचिंग करने लगे थे. हाँ. तो आपने कैसे बिल्डअप किया, और जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, लाइक जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो थियोरेटिकल से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. लाइक हमें भी अभी जैसे यू नो कि आई एम जिमनास्ट, तो हर इंडिविजुअल अलग अलग अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से अलग अलग कंडीशनिंग्स अप्लाई करता है. हाँ. तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि किस इंडिविजुअल को क्या ज़रूरत है और कैसे बिल्डअप करना है, और एक स्टूडेंट का माइंड कैसे डिफरेंट होता है कोच से? स्टूडेंट का माइंड ऐसा होता है कि एक तो गुरु है, एक चेला है. तो चेले को जो है वो गुरु का आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो गुरु है. सो आप सब कुछ, जैसे कि मैंने जब शुरू किया मैं सारे खेल करती थी, मगर एक गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब मेरे कोच आए, जो सबसे पहले कोच थे, उन्होंने मुझे फौरन रनिंग में ले आए. मगर जब वो चले गए और दूसरे आए तो उन्होंने चूज किया कि मैं कौन सा इवेंट अपनी लाइफ में करूंगी. वो उनका रोल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट हो गया. उसके बाद जो दूसरे मेरे तीसरे गुरु आए, जो मिस्टर श्री राम सिंह जी थे, उन्होंने मेरे को मेहनत कराई. उनका रोल भी इम्पॉर्टेंट हो गया कि मुझको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, कैसे रहना चाहिए. तो हर एक गुरु का भी रोल अलग अलग डिफरेंट अलग अलग होता है. मगर चेले को सब कुछ सीखना होता है इन ऑर्डर टू
अचीव सक्सेस इन लाइफ। मगर जब तुमको एक अच्छा गुरु मिल जाए लाइफ में एक जगह पर, यू स्टे देयर। अगर आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, आप उस कोच के साथ स्टे करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आप एक नए गुरु को ढूंढना शुरू करते हैं कि जो आपको हेल्प करे टू कम अप। और टेल मी अबाउट द स्ट्रगल्स, लाइक बहुत पहले आपने ये सब स्टार्ट किया, उस टाइम तो इतना क्रेज भी नहीं था और इवन जेंडर इक्वालिटी भी नहीं थी उस टाइम पे। हाउ इट वाज पॉसिबल? लाइक पेरेंट सपोर्ट तो होगा ही, एंड व्हाट आर द इंटरनल एक परफॉर्मेंस होती है जो कि सबको दिखती है कि ये विक्ट्री है, बट हमें बहुत सारे लाइफ में ऐसे बैटल्स भी क्रॉस करने पड़ते हैं जो कि हम किसी को कन्वे नहीं कर सकते और जो हमें करना ही पड़ते हैं। उनको करे बिना हम वो वाली अचीवमेंट्स कर ही नहीं सकते। सो हाउ वाज दैट कि लाइक पीपल, व्हाट आर द परसेप्शंस ऑफ योर नेबर्स और द वंस हु पुल यू डाउन? ओके, देखिए, जिंदगी में तो नेगेटिव और पॉजिटिव पीपल होते ही हैं, और दोनों के बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नेगेटिव भी सुनिए, मगर आपको पॉजिटिव सोच के चलना पड़ेगा लाइफ में। पर इन लाइफ आपको एक जगह पहुंचेंगे जहां आपको नेगेटिव पीपल को एकदम स्टॉप कर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हमेशा नेगेटिव ही सुनते जाएंगे तो यू विल नॉट इम्प्रूव। तो सुनिए नेगेटिव, बट अप टू सम लिमिट, देयर इज अ लिमिट। आफ्टर दैट स्टॉप, और आप नेगेटिव को अलग कर दीजिए और पॉजिटिव सोच करके अपने लाइफ में आगे चलिए, देन ओनली यू विल अचीव सक्सेस। तो हर एक की जिंदगी में होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव पीपल, तो मेरी लाइफ में भी था। और उस टाइम पर क्योंकि एशियन गेम्स में किसी ने मेडल ही नहीं जीता था सिवाय कमलजीत के, और काफी टाइम भी, हाँ, तो और उन्होंने जीता कैसे कि जब वो चाइनीज लड़की गिर गई थी तब उसने जीता। तो मेरा तो किसी को होप भी नहीं था किसी भी मेडल का, और मुझे भी नहीं था। तो मेरे को सिर्फ दौड़ने का शौक था, तो बाकी सब भगवान की दया से हुआ। तो लाइक यही मंत्र सबको फॉलो करना चाहिए कि अपना जो काम है उस पे फोकस करो, रिजल्ट का मत देखो। वो तुम अच्छे से करोगे तो रिजल्ट आजकल ज्यादातर लोग देखते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, कि अच्छा हम स्पोर्ट्स में जाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा। तो हमारे टाइम पर स्पोर्ट्स में इतना पैसा तो नहीं था, मगर हम लोग स्पोर्ट्स करते थे सिर्फ क्योंकि करना होता था, क्योंकि हम दौड़, हमें शौक था। उस टाइम पे लोग स्पोर्ट्स करते थे एज ए हॉबी बिकॉज दे लव्ड। बट नाउ इट इज मैं देखती हूँ लोग ज्यादातर स्पोर्ट्स करते हैं पैसों के लिए, हॉबी नहीं रही आजकल, क्योंकि पैसा इतना आ चुका है, एंड मनी इज द रूट ऑफ इविल। तो और वो लोगों को बहुत बिगाड़ भी देती है जब आ जाता है। हाँ, तो लाइक वी कैन सी डिफरेंस कि जब उनके पास नहीं होता और जब एकदम से आ जाता है तो पैसा ज्यादा आ जाता है तो कैसे बिगाड़ देता है। दे डोंट नो हाउ टू यूज इट, और वो वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मगर हमारे टाइम पे तो पैसा था नहीं। हमारे टाइम पे जो स्पोर्ट्स था वो सिर्फ हम लोग शौक से करते थे कि हाँ, ओ आई लव टू डू दिस, आई लव टू डू दैट। तो पैसा नहीं था, मगर पैसा जो शुरू हुआ वो मेरे टाइम से शुरू हुआ जब मैंने एशियन गेम्स जीता। मगर उस टाइम इतना पैसा नहीं था, आजकल बहुत हो गया। और आजकल लोग ज़्यादातर मैं देखती हूँ मोस्टली पैसों के लिए है, खेल जो है पैसों के लिए है, शौक के लिए नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत से लोग जब जीत जाते हैं, पैसा मिल जाता है, फौरन रिटायर हो जाते हैं क्योंकि पैसा मिल गया बहुत। हमारे टाइम पे कोई भी एशियन गेम्स वगैरह जो है एक नहीं 2-3 करते थे, आजकल एक कर लिया। एशियन गेम्स में जीतना बहुत मुश्किल होता है, और अगर जीत जाओ तो बस तुम्हें नहीं पता नेक्स्ट एशियन गेम्स में यू विल एबल टू विन द सेम मेडल और नॉट। स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा जाता है, हर साल ऊंचा हो जाता है। तो आजकल लोगों का इतना वो नहीं रहा क्योंकि पैसा बहुत आ गया स्पोर्ट्स के अंदर में। और करप्शन दैट टाइम आल्सो देयर वाज, क्योंकि आज के टाइम तो है, आज के टाइम पे जहाँ पैसा है वहाँ करप्शन है, दोनों एक साथ जाते हैं। हम वहाँ पे तब पैसा नहीं था और करप्शन नहीं थी, बस पॉलिटिक्स थी, जेलसी थी। वो अभी भी है, वो भी अभी है, मगर अभी जो है पैसा और करप्शन दोनों ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल की जनरेशन में ऐसा क्या फॉल्ट है कि जो उस टाइम पे जनरेशन्स में नहीं होता था? एक्सपोजर। हाँ, क्योंकि हमारे टाइम पर इतना हम लोगों को कंपटीशन नहीं मिलता था, एक्सपीरियंस नहीं मिलता था, हम लोगों को इतने
आउटसाइड हम लोग कंपटीशन करके एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाते थे, सीधा यहाँ से जाते थे सीधा एशियन गेम्स में चले जाएंगे, ओलंपिक्स में चले जाएंगे। आजकल इतने कंपटीशन ओपन हो चुके हैं कि लोग बिफोर दे गो टू एशियन गेम्स और ओलंपिक्स दे हैव मैनी कंपटीशन overseas, in national level also. national level and overseas also before they participate in Asian Games or Olympics, so they get experience, good experience. हमारे टाइम पे नहीं था ये, तो हम लोग तो सिर्फ अपनी किस्मत से जीतते थे, हार्ड वर्क करके जीत जाते थे, but it is very good. आपकी लाइफ का बेस्ट डे क्या था? बेस्ट डे था जब मैंने अचानक से मैंने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता, वो मेरा बेस्ट डे था। क्यों? मेरे को कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कोई भी मेडल जीतूंगी, और जब फाइनल शुरू हुआ, जो कोरियन लड़कियां थी उनको कुछ पता चल चुका था कि मैं एकदम से कहीं से निकली, क्योंकि मैंने कहीं इंटरनेशनल कहीं पे भी मैंने कंपटीशन नहीं किया था। तो हीट्स के बाद उन्हें पता चल चुका था कि इट्स समथिंग वी हैव टू लुक व्हेन द रेस स्टार्ट्स फाइनल। तो उन्होंने मेरे को एक तरह से ब्लॉक कर दिया था दोनों ने रेस में, और मैं एकदम नई थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और मेरे उन्होंने हाथ दोनों तरफ से खींचने शुरू कर दिए लास्ट 100 मीटर में वो जीतने के पीछे खींचे। मेरे को बहुत डर लग गया था। इट वाज ऑल इन द वीडियोस, और कहते हैं ना लक का जरूरी है। लेस नॉलेज अबाउट यू एंड द टूर्नामेंट्स यू प्लेड ऑन गूगल एंड विकिपीडिया, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। क्या चीज? नॉलेज और आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो जो हुआ उस टाइम पर मेरे साथ रेस में, उसने मुझे को इतना डरा दिया, शेक कर दिया। हाँ, बट मैंने कहा ना कि जैसे कि वो मेरा हाथ दोनों तरफ से दोनों खींच रही थी, जिस विच नेवर हैपेंस। उनको हमारे मैनेजर ने डिस्क्वालीफाई करने के लिए डाल दिया, बट आई डिसाइडेड टू ड्रॉप इट, क्योंकि मैंने गोल्ड जीत लिया था। आई डिडंट वांट एनीवन टू बी डिस्क्वालीफाइड। So kind of you. हाँ, तो क्यों I just decided that. Thank you for the consistent lineage to pass on to further generations to do that. और अभी I will take a segment जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, 1 word क्वेश्चंस होंगे, और आप इंस्टेंटली उसको सोच के आपके दिमाग में आता है, जस्ट से दैट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। God. Everything. Peace. Everything. Health. That is also everything. Family and parents. It's very important. Money and power. Money is important, but money is not everything. Ideal person. My parents. Childhood. I never had childhood. Fitness. I still jog for fitness, so it's very important to keep yourself fit after retirement. India. India is my country. I love India. USA. I love New York. Injuries. Injuries, I never had any injuries all the Really? time. Never, because I used to do yoga, and yoga prevents injuries. तो मेरे को कभी भी मेरे स्पोर्ट्स के खिलाफ मैंने 12 साल की उम्र से खेल शुरू किए until 28. मेरे को कभी कोई स्पोर्ट्स इंजरीज नहीं हुई, क्योंकि मैं योगा करती थी. And that's why now the Western countries has started to do yoga, because you prevent injuries by doing. What was your diet at that time? मेरी कोई डाइट नहीं थी. I used to eat everything, but I never ate junk food. Junk food मैंने कभी भी नहीं खाया. You know what junk food is? Yeah. Junk food मैंने कभी भी नहीं खाया, but I used to eat everything. Like जैसे? But food. Fruits. जैसे like you were non-veg or vegetarian? I eat meat, but I don't eat that much. Little bit, once a week. Okay. And eggs also? Yeah, I eat eggs every day. Okay. और music? Oh, I listen to music of. Music artist भी बता देना favorite. His name is Karunesh, and I listen his music on YouTube all the time. Okay. And I have another musical. His name is
Well, let's leave it there. I forgot his name. You love music? I love music. It boosts your mood, or why you love music? Why I love music? Music is everything. Music makes your lives go around. And you need a music, because you know what? Sometimes you are stressed out, and sometimes you're thinking something and you don't want to worry about it too much. So अगर आप म्यूजिक को सुनना शुरू कर देंगे, it will ease you down, calms you down. According to you, what are the most important qualities in a person or any individual? Most important qualities. Well, whatever you decide to do, अपनी जिंदगी में जो भी करने की कोशिश करें और आप गोल बनाएं कि you want to achieve that, you should go for it, Despite of obstacles. because that will be always there. Nice one. Or sportsmanship, teamwork. Teamwork is very important. Like nowadays, individuals are just thinking about themselves. Like what you expect from other people, first give it na. They never give respect, and they expect कि वो हमें respect करेंगे. Well, the respect is a two-way street. You give, you get. You take, yeah. If you don't give respect, you don't get respect. So I think people जो respect देना नहीं जानते, तो उनको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनको कोई respect देगा. So it is first you give, then you will get. They never recognize कि what they are doing. They blame, they recognize everything कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और वो ये नहीं सोचते कि in contrary part वो भी वही कर रहे हैं, वो भी कोई change put on नहीं कर रहे. ये बहुत difficult है अपने को जानना, but it's very easy. You can talk about other people. Other people's, yeah. Because it's easy. But to know yourself, it's very difficult. Once you know yourself, what you're doing, you will never want to know what other people are doing. Or that's my life is. मुझे पता, I know myself and I know what I'm doing. And that's why I don't want to know what other people are doing. And that make you respect people. And that makes my life very simple, very easy. And that's why I respect other people. Like, I personally believe the one who respect others have ability to respect himself also. You have to respect, you have to have self-respect. अगर आपके पास you don't have self-respect, then nobody will respect you. Exactly. So they all go together. So one has to understand how the respect works. Like I was reading a book, I don't remember the name. उसमें लिखा था कि you can first be nice to people, be nice twice to people, thrice to people, and then you can manipulate and change yourself into a bad one if they don't reciprocate. Don't be bad just in fun first glance, क्योंकि that will give the perception of you to that person that कि ये person ऐसा ही है. आपने जो कहा कि वो ठीक बात है कि आपको पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं और आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. Once you know that, and then you have to correct yourself. तो किसी और को जानना कि और कहना कि वो सही है या गलत है, वो मेरे ख्याल में बहुत आसान है. अपने आप को चेंज करना और अपने ही थॉट्स को रीइवैल्यूएट करना. अगर आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसको चेंज कर लीजिए. बट इफ समवन विल टेल मी दैट यू नीड टू चेंज योरसेल्फ, मैं कहती हूँ व्हाई? I don't see there is anything wrong in me. Wrong, yeah. So What you wrong only like to change yourself if you think you are doing something wrong. मैं कहती हूँ I'm not doing anything wrong. Why should I change myself? I'm happy. Yeah. So if you think there is anything wrong with me, it's your way of looking things. Exactly. और Vatican City. Huh?
memories regarding Vatican. Vatican City. Okay. I saw your, you know, this. Picture? Yeah, exactly. That's why I put this question here. You know, I am not a sightseeing. I don't go for sightseeing. I've traveled so many countries. मगर जब मैं रोम में थी for World Cup, तो उन्होंने बोला कि you will only go for shopping after sightseeing, and I'm so happy I did that. So we went to see the Vatican City. It's so beautiful, and it's something people should go and see. Vatican City. I liked it. Moscow. Moscow is a beautiful city, but the food is not nice there. Okay. Italy. I love Italy. Thailand. Thailand is beautiful. Or Tokyo. Tokyo is very beautiful because I have traveled to Tokyo for competition many times because my sponsors were Essex Tiger. So I used to get many invitations to go and compete there. So I love Tokyo. How was you feeling जब आप ओथ ले रहे थे, जब न्यू दिल्ली में हुए थे 1982 एशियन गेम्स में? अच्छा, उसका मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि 1982 एशियन गेम्स में जब ओथ लेने के लिए तीन मेल थे और मैं एक थी, तो एक थे प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से, एक हॉकी के प्लेयर थे कैप्टन, और एक हमारे एथलेटिक्स के बहादुर सिंह थे, चौथी मैं थी। तो हम 4 लोगों को 1982 एशियन गेम्स में ओथ के लिए चुना था और हम में से एक को ओथ लेनी थी और मुझको कुछ पता ही नहीं था। तो जब मेरा नाम सेलेक्ट हुआ तो देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने, वो थी सिलेक्शन पे, वो शी वाज टेकिंग इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। तो जब उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया तो मेरे को कुछ पता नहीं था। आई वाज लाइक, तो एकदम से मुझको बहुत हैरानी हुई क्योंकि एट दैट टाइम माय अचीवमेंट्स वर बेटर देन एवरीवन। तो उन्होंने मुझको 1982 एशियन गेम्स में ओथ लेने के लिए सिलेक्ट किया एंड दैट वाज लाइक अनदर फेदर इन माय हेड एंड आई वाज वेरी हैप्पी। हाउ वाज योर फीलिंग व्हेन जब आपको पद्मश्री मिल रहा था और अर्जुन अवार्ड मिल रहा था? अर्जुन अवार्ड मेरे को 1976 में मिल गया था बेस्ड ऑन माय इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, बट पद्मश्री जो थी वो 1978 एशियन गेम्स में जीतने के पर गोल्ड मेडल के, और गोल्ड के साथ मैंने सिल्वर भी जीता था 1982 एशियन गेम्स में। तो कमलजीत संधू जो थी उसने सिर्फ गोल्ड जीता था। सो आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन सिल्वर विद द गोल्ड मेडल and I was the only woman with the gold medal in the whole Indian team. तो मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे उन्होंने they gave me Padma Shri and that was another surprise for me. I know I deserved it, but I got it in 83 and they gave it, and this was a big honor for me, and I give all the credit to my parents for their support and sacrifices. What do you think, according to you, what's the purpose of life? Like Purpose? why we take birth and we just die? Purpose of life. In between. Purpose of life is that when you come, you do what you are meant to do, and that's your karma. And you do your karma and you go, and everybody has to go one day. And whatever your karma is, that will depend on your next time when you come. So karma plays a very important role in everybody's life. And I think I have done good karma. Or one word which describes you, your whole personality. One word. One word. Describe my whole personality. Like what you are, just in one word. Nothing. I'm happy what I have. I'm happy with everything I have. Grateful? I'm very grateful, and I am very happy what God has given to me without my asking anything. So in my life, मैंने जो कुछ भी मिला है वो बिना मांगे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। तो I'm happy what I have.
what advice you will give to the students who are in 20s, the adults who are in 30s, and share your life experience, like how was you in your 20s, 30s, 40s, and 50s, like what difference these decades bring in a human's life. Well, the life is something like this. It's full of changes. So you will not have same day like you had it today. So tomorrow you will have a different day. So life is full of changes. So, and like you know that time and tide waits for no one. So you have to choose things very carefully in your life, what you want to do and what you want to be in your life. Because once the time is gone, there's only regret left, nothing left. So you have to choose wisely that this is my goal in my life and I want to do this. Choose wisely, because that's the way life is. Because once the time is past, you will never get that time back. What are the bodily changes and mental changes in different age durations? Like I asked, like your 20s, and like you are 66 now, na? So what is the experience that you experienced in different stages of life? Like how was your 20s, and after being adult, how was your 30s and 40s? Yeah, in 20s and 30s, I never had time to think. Because I had a goal in my life. I love to run. I love to train hard. And the performance, I left it on God. It all depends on competition. So in 20s and 30s, it was a different goals, different everything. But when you retire, then the goals change and things change. You think differently, you do things differently. Then you started to think about keeping yourself fit, doing different things, doing different hobbies. Because sometimes when people retire, they don't know what to do. They But- just leave everything. Yeah, they don't know what to do. But when you retire, you have to think, I can do something different now, because to keep myself fit and continue the life. So every time, every 10 years, and when you retire, you have to make changes in your life. Changes automatically will start. Like people think whatever they are doing, they want something in return, कि जिसमें वो कर्मा पुट कर रहे हैं उसको उनको कुछ मिले, but they don't think कि exercise, meditation, growing your personality, learning new things is a way of life. They think अब सबसे छुट्टी, अब कुछ नहीं करना. So that takes to many people into depression. Exactly, and nowadays it's a major problem. Yes, because when that happens, then the depression takes over. So if you keep yourself busy with different activities, the depression will never take over. Because you have to, there is a saying, empty head is a devil's mind. Exactly. Okay, so you have to keep yourself busy and occupied. Your mind has to be occupied and keep yourself busy. If something doesn't work out, you do another thing. Keep yourself busy in sports. If you're a sportsman, after retirement, continue with different sports. Like I changed my sports. I don't compete anymore in track, but I still go for jogging, for fitness. But on the side, I started riding. So you have to choose what you wanted to do. Nobody will do it for you. You have to choose yourself. Competition, that always give me nervous breakdown. oh, But I always like Get that, over it. because when you're nervous, you perform better. yeah, like because of more exposure and competition, that is also the major factor of depression in nowadays. We can see major of the percentage in that much big, 12, 13, 14, this age duration, they are also having depression just because of this, because there is no limit of exposure, of knowledge, and of competition. They start doubting themselves. The thing is that then this starts sports activities. I think that the children should get involved in some kind of sports. Exactly, And that builds up their personality. yes, it will give them confidence, Yeah. self-confidence,
and it will give them something to do, something to think about, Invest on. and something to wait for. That tomorrow is coming, I will be going again for that. So whatever sports activities they like to do, they should get involved in there. So the depression and all will not exist then, because you can't live taking medication all your life for depression or anything. But if you get involved in sports, that will definitely help. Limits. There are no limits. Exactly. Indira Limits are put there from negative people. But positive people have no real limits in life. No, there are no limits. Like means rules इसलिए होते हैं कि उनको तोड़ा जा सके. To break. Exactly. Rules are made to be broken. Yeah. वैसे ही limits पे. हाँ, बिल्कुल. Because there are no limits. Limits, yeah. If someone will tell me that there was a that is the perception of your mind, not the reality. जब मैंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता, I became the first woman to win gold and silver in Asian Games. तो लोगों ने कहना people were present there कि ऐसा नहीं होता, इतनी लिमिट है. हाँ, तो लोगों ने मुझे सुना कि किसी ने ऐसे बोला, now she should retire. Somebody put the limit there. She should retire because at that time that was the highest thing. So I didn't retire. After that, I went on winning Asian track and field 79, 81 Asian track and field. Again, I win gold and silver again. Again, yeah. And then silver and silver. And yes, and then in 82 Asian Games, it came second Asian Games, because a lot of people do not participate in second Asian Games because it's always after 4 years. Because they don't know each year how people are improving in sports, because China and Japan, they go very fast. They improve fast. What about people retire? Because you don't know from one Asian Games to second Asian Games if you will able to keep the same performance. So I continued for second Asian Games, and it was good. I liked it. IndiraGandhi, like how she was as a person. She was a beautiful and very, very good person, and I was fan of her. And she did something for me as a sports person. She did something which press knew at that time, and when press recognized that she did it, she broke the law, and she did it. It's something she did, and she knew that the jealous people, they tried to block it, and they were trying to hurt me and harm me. She found out that, and I was told that now the law has to be broken, and she is the only one who will break the law and correct what these jealous people did. You see, jealousy existed and still exists. It is just infinite cycle. Yes. See, but these days people call it a different name and different things. But during those days also, people were trying to hurt, and jealousy. So people try to hurt and do jealousy. They try to hurt, and they did something to me. Pull people down. Yes, and she find out that, and the press knew too, that now there is a law has to be broken, and she was the only one to break the law, and she did broke the law for that, and she corrected what they did to hurt me. And the press next day morning, all the newspaper was filled with her praise, and I never said anything after that. But only the press knew, and I knew, and she knew that what people did to hurt me. Only out of jealousy, nothing else. Will you mention that? No. No. Okay, fine. Morarji Desai. Oh. Well, I've done all research on you. I can tell. Yeah, he was a good prime minister. I liked him. He was a very good prime minister. He was connected with your memories of award, na? Yes. He gave me some awards and the cash and prizes, because after I won Asian Games, yes, he was prime minister. Dilip Saab. Oh, Dilip Saab. I'm so great fan of him, and when he passed away, yes, Dilip Saab was a very good man. I liked him very much, and we met one time in function, and when he passed away, I put it on the Twitter picture with him. And nobody had a picture with him, but I did. I expressed my sympathy, but he was a good person. I liked him.
I love his movies and everything. President Singh. Jail Singh? President Jail Singh? Jail Singh. Yeah, President Jail Singh, he gave me Padmashri. And yes, he was also a good person. I liked President Jail Singh, nice person. I want to ask, what's the, magic behind this glow in this age also? Magic behind the glow? It's a yoga and meditation. Just Yoga and meditation, and I don't worry too much, and I take the things as they come, and yoga and meditation keeps me online. Otherwise, there are all kind of people outside. Even though I'm retired, but still there are people out there, those who are jealous of my achievements in my life, what I achieved in my life. There are still people out there. Yoga and meditation share the sense of serenity, Yes. happiness, and all. Yes. Which I think which puts a person on a track, like without self-doubting, and only the growth is the focus in that. Yes, I agree with you. Your most important learning of life? Most important learning, I learned how to work hard and dedicate yourselves in your life, anything you want to achieve. So you have to have a goal in your life and you have to go for it. Even though you don't succeed, you have to try it again. After the failures, you will succeed one day. Your worst day? Bad, in bad sense. My worst day, I never had any worst day. I never have any worst Really? day. No, I never, because I'm pretty into myself. I don't do things like that create any problem or something. So I don't have any worst days. Okay. I'm running out of questions now. Share a message to people, like whatever you want to share, and give an advice to me, like how should I proceed in life? My message is to people is that, if they do sports, they do it for the love of sports. And if it takes you somewhere, it's good, but do it for love of sports and not for the money. For you, you're young, but I see that you do meditation. Yeah. So that's very good. And in your life, if you want to achieve anything or goal, you wanted to have anything, that you should try that, and I think you will succeed. I have multiple I see that you're very, very determined, that you told me that I'm coming to do this and we'll do that, even though we changed the dates a couple of times because of different reasons, but we finally did it this. Yeah, I have multiple interests. I just love, मेरे पापा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नाव में पैर नहीं फंसाने चाहिए, हाँ. but I still think कि I can manage everything and I can pursue every interest of mine. I think your father is right. If you put your feet in two boats, you will drown. So, but it's not exactly same thing. You have to start different interest in the beginning, Yeah. because you're young. So you don't know which line you will like to go. Like I think कि जिस टाइम जो काम किया जाए, हाँ. पूरा फोकस उस पे होना चाहिए. हाँ, नहीं, Like बिल्कुल. एक काम है, उसको कंप्लीट किया, ठीक है, उसको साइड में. अब नेक्स्ट वन वो किया, then another one. Yeah, so you have, whatever you start, you're saying you have to finish it and then start another one. Another one, yeah. So that's true, because I know many people, they start something, they couldn't finish it, then they leave it, they go for another one, and then they go with another one. So they start everything, but they never finish it. Yeah. So those people, you will know that anything they will start, they will never finish it, and they will never make it, and they will never reach their goal. So once you आप सब चीज में थोड़ा इंटरेस्ट करके फिनिश करके देख लीजिए, then
you decide आपको कौन सा अच्छा लगता है. Your spirit will guide you. Like मेरे spirit ने मुझको guide किया कि running was my field. I was sitting there, but it guided me to go there. Your spirit will tell you Like- what is your line. People say कि we never choose things, things choose us. That is very true because आप कोशिश करेंगे सब चीज करने की, मगर आपकी spirit आपको guide बता करेगी. देगी कि this But is the thing. this is the right thing you should be doing. But आपकी spirit अगर आप एक चीज करेंगे तो नहीं बता सकेंगे. So you have to do different one. So then you will able to choose what is right for you to do. Last question, then we'll end up. When you do meditation, what's the process? Like you sit still or you chant some mantras or something? No, when I do meditation, sometimes I sit, sometimes I stand, and I do meditation, and I do japa. 108 beats. I have a japa mala. I do japa With some mantra? mantra, Which which if is you want- Lord Shiva mantra. Like you can tell me, like if you want The to. mantra is given by guru. So Okay, so you can't. Okay, no, okay, done. mantra you cannot tell. So it's only your guru gives it to you. So mantra I chant with the japa, and I do that, and I do meditation. So it's like almost every day I do 35 to 40 minutes Nice. in the morning. Yes, I keep that time because I know that much time I'll take. So yeah, it's meditation. It's Thank you again. my We are ending pleasure. up. This kind of